स्टूडेंट्स, हम लोग जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन कर लेते हैं आपके एक्सरसाइज 2 जो कि कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड है। तो प्रॉब्लम नंबर 13 क्या है? क्लासिफाई द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x व्हेन एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटीज की, और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है वी हैव टू फाइंड, है ना। हमें ये बताना होगा कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ओके, तो आइए लेट अस सॉल्व इट। तो फंक्शन है तुम्हारे पास एफ एक्स, तो एफ जीरो एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो। हमें लिमिट देखना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो आइए जरा लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात कर लेते हैं। दिस इज योर लिमिट। कैसे लिखते थे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ tan इनवर्स of 1/x, है ना। We know that when you are this limit x tending to 0 minus of 1/x is just equal to minus infinity, so you can just put here, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, और tan की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कब टेंड होती है? when this angle is tending to minus pi by 2, so it will be minus pi by 2. Similarly, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस विच इज tan इनवर्स ऑफ 1/x, और ये क्या हमारे पास हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट इट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस 1/x इज जस्ट इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पर ये जो है पाई बाई 2 वैल्यू हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट बोथ आर नॉट इक्वल। तो हियर हियर सिंस हियर लेफ्ट हैंड लिमिट is not equals to right hand limit, and this implied limit does not exist. Limit does not exist. This implies given function is discontinuous at x is equals to 0। एंड किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट बट बोथ नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट but not equal, so the discontinuity is of type of the first kind. So this implies discontinuity is फर्स्ट काइंड, है ना। फर्स्ट काइंड में ये होती कंडीशन, ये हमारे पास लिमिट्स एग्जिस्ट करें बट इक्वल ना हो, है ना। चलिए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास फंक्शन क्या है? दिस इज योर एफ एक्स is just equal to 1/x minus a, and this is your sine inverse 1/x minus a, where this x is equal to a। ठीक है, x बराबर a पे चेक करना है। तो आइए जरा सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू व्हेन x टेंडिंग टू a, you can't say anything, but what about the लिमिट? तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालने जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस 1/x minus a, and this is your sine of 1/x minus a। तो यहाँ पर हम, अगर हम यहाँ पर
बात करेंगे लिमिट की। यू नो दैट गिवन दिस लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, देन 1/x माइनस a विल बी टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। जैसे कि अभी हमने ऊपर हमने करा था, तो this will be, you can say like this is infinity minus का, and this is sign of minus infinity, you can say like this, and this is minus infinity, and ये माइनस अब बाहर ले लो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इनटू साइन ऑफ इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आई एम नॉट सेइंग infinity when this x is tending to a, then 1/x a will be tending to infinity, and this will be some finite value, and when you multiply some finite value to infinity, will get some infinity। ठीक है, तो it will be plus infinity। Similarly राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात कर लें, so we can just say limit this is x tending to a plus this is 1/x minus a, and this is your sine of 1/x minus a। और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, it will be what, it will be plus infinity, because we know that this limit x tending to a plus 1/x minus a, it gives your plus infinity, so this plus infinity and sine of plus infinity, and when you multiply it you will get this is your infinity। तो इसका जो कह सकते हो कि लिमिट इन्फिनिटी पे जा रही है, when you are just saying limit when x tending to a, this 1/x minus a, and sine 1/x minus a is equals to infinity, it means plus infinity, but it is not value of the function is not exist at this point, and अगर हम बात करें कि लिमिट भी हमारे पास फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस टाइप का जो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू को जो डिफिकल्टी आ रही है वो पॉइंट पे आ रही है, दैट इज योर एक्स इक्वल्स टू ए। तो अगर हम एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट हम अपनी डोमेन से हटा दें या उसके अलावा किसी पॉइंट पे चेक करें, तो वी विल नॉट गेट अ डिफिकल्टी। so it means that this is a removable discontinuity, we can say this implies function is discontinuous not is not continuous and it is a removable discontinuity, it is the removable discontinuity। ओके, तो दिस इज अ पार्ट सेकेंड। सिंपली हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं पर when this infinite limit exists, and in that case the limit exists but function value is not be determined, and the limit is also, so we have got a difficulty at point x equals to a, so this is a removable discontinuity। okay, नंबर थर्ड पे है कि दिस fx is just equal to x square x minus 2 at x is equals to 2। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट भी निकालने जाएंगे, चाहे हम फंक्शन की वैल्यू निकालें, डज नॉट एग्जिस्ट, ना ही फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अगर हम बात करें लिमिट की, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 it does not exist, डज नॉट एग्जिस्ट, या कह सकते हो इंफिनिटी हमारे पास आएगा, जैसे जो to the form is 0, it means it will be tending to infinity, so this plus infinity, you can just say plus infinity and minus। तो अगर थोड़ा सा हम निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए,
So left hand limit is just equal to limit x tending to 2 minus, and this is x square upon x minus 2. So we clearly know this is x minus 2 will be minus infinity, and this is 2 the square into minus infinity, and that will be minus infinity. And similarly right hand limit की अगर हम बात करेंगे, this is our limit x tending to 2 plus, and this is x square upon x minus 2. So that will be equal to 2 square into plus infinity, and that is equals to plus. The concept of limit 1 upon x minus a is going to plus infinity. We are reaching from right, and with minus infinity reaching from left. Clear? तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर, एक प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करती हैं लिमिट्स की अगर हम बात करें, और बोथ आर नॉट इक्वल, इन दैट केस the function is a discontinuous and showing the discontinuity of the second time. So hence function is discontinuous, and discontinuity at x is equals to 2. And discontinuity of sine of second term. Second term. ओके तो इस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जाती है जिसमें डिसकंटिन्यूटी की टाइप भी पूछी जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस केस में अगर डिसकंटिन्यूस है, किस टाइप का है, वो किस काइंड का है, ये भी आपको बताना होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 13 का सोल्यूशन हो गया। अब हम 14 की तरफ बढ़ते। 14 में भी कुछ ऐसे ही पार्ट्स है, और उसमें भी आपको काइंड इन्वेस्टिगेट करना है। 14 इज investigate investigate the kind of discontinuity of the following function at the indicated points। सेम प्रॉब्लम है एज 13। इसमें भी हमें बताना है कि किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। फंक्शन है fx इज इक्वल टू e की पावर cot x minus 1 divided by e की पावर cot x plus 1, and this is your f0, which is 0 at x is equal to 0। ओके, तो एट एक्स इक्वल टू 0 की हम बात करते हैं। तो व्हेन x is 0, that cot x is infinity। we know that कि हमारे पास ये होता है ना cot x is equal to होता है cos x upon sin x। तो sin x 0 पे 0 होता है,
It will be tending to zero, that whole thing will be tending to infinity. It will be tending to infinity. ठीक है. ओके, तो आइए जरा देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आता है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसका हम निकालेंगे तो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस. ओके, तो जीरो माइनस जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है ई की पावर. चीज ध्यान दीजिएगा कि वॉट एवर द वैल्यू ऑफ टेंडिंग टू जीरो, जैसे हमने लिखा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ साइन ऑफ दिस एक्स. ओके, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू तो जीरो ही आएगी, है ना. इट विल बी जीरो. तो ये जीरो तो एक और इन्फिनिटी आएगा, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं. जिससे हम टेकिंग ई की पावर कॉट ऑफ एक्स हमने बाहर लिया तो ये हो जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस कॉट ऑफ एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई दिस इज योर ऑफ द थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को. एक चीज समझिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस जाएंगे और कॉट एक्स को कैलकुलेट करेंगे, तो साइन जो जो हम स्लाइटली जीरो से पीछे की तरफ है, मतलब निगेटिव वैल्यू, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट, माइनस ऑफ साइन थीटा. ठीक है, तो ये माइनस का इन्फिनिटी आएगा. इट विल बी टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी. तो यहाँ पर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस वन कुछ इस तरीके से आएगा. पहले तो हम फंक्शन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे. तो ये हो जाएगा ई की पावर cot of x minus 1 divided by e की power cot of x plus 1. When you are just putting here e power minus infinity minus 1 upon e की power plus minus infinity plus 1. तो ये e power minus infinity मतलब होता है 0 minus 1 and 0 plus 1. It means it will get minus का 1. Let's right hand limit की हम बात कर लेते हैं. Right hand limit. So this is your limit when x tending to 0 plus, and this is e की power cot of x minus 1 upon e की power cot of x plus. But when you are just saying this limit is x tending to 0 plus, this is cot of x with positive of infinity. तो इस तरीके का लिमिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करिए, इसमें से e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसमें e की पावर कॉट ऑफ x बाहर ले लीजिए, तो माइनस का बचेगा 1 माइनस e की पावर माइनस कॉट ऑफ x. ओके, डिवाइडेड बाय e की पावर कॉट ऑफ x, एंड दिस इज 1 माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस द कॉट ऑफ x. ओके, तो यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास बचे क्या, दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 1. जब लिमिट लगाएंगे तो ये कुछ लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए. तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये हो जाएगा तुम्हारे 1 माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी, एंड दिस इज 1 प्लस ई पावर माइनस इन्फिनिटी. इट मीन्स 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, यू विल गेट 1. तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1 और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, प्लस की 1. So since left hand limit is not equal to right hand limit, this implies function is discontinuous
discontinuous and discontinuity is of first kind, है ना, फर्स्ट काइंड की discontinuity and discontinuity of first kind of first kind, क्लियर। तो ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस fx 1 plus x square upon 1 plus x and at x is equals to -1। तो यहाँ पर वैल्यू फंक्शन की तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट लेट अस सी अबाउट द लिमिट। तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 minus sorry minus of -1 minus का 1 and this is of this function 1 plus x square upon this is 1 plus x। तो जब करते हैं तो कैसे करते हैं, लिमिट h is tending to 0 and 1 plus जहाँ पर x है उसकी जब लिखेंगे -1 minus h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 minus 1 minus of h। तो इससे कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और we can simply say this is limit h tending to 0, 1 plus 1 base square is 1 plus h square plus of 2h। तो प्लस का हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ h। तो ये हो जाएगा तुमका लिमिट दिस इज योर h टेंडिंग टू 0, ये 2 अपॉन माइनस का h हो जाएगा एंड दिस इज प्लस ऑफ h एंड प्लस ऑफ 2। तो इसमें जब आप लिमिट लगाओगे तो यू विल गेट माइनस ऑफ इंफिनिटी। सिमिलरली यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लिमिट, दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट से, और जब हम राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट में x टेंडिंग टू -1 प्लस दिस इज 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x, है ना, देन इट विल बी गेट प्लस इंफिनिटी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिमिट माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी आ रही है। तो दिस इम्प्लाइज function is discontinuous function is discontinuous and discontinuity of second kind, है ना। जब हमारे पास प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी लिमिट्स आ रही हैं तो उस केस में डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, क्लियर। तो आइए जरा थर्ड नंबर वाली प्रॉब्लम करते हैं, थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। थर्ड क्या है कि fx इज जस्ट इक्वल टू x sin π/2 at x is equals to 0। क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग है हमें लगता है, क्योंकि हमारे पास x अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, फंक्शन की वैल्यू अप्लाई करते हैं, साइन π/2 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा ना। तो आई विल टेल यू लेटर। अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो ये तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है,
है ना, sin पाई बाई 2 इज 1 एंड दैट इज योर x। तो यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग है, आई थिंक साइन पाई पाई एक्स बाई 2 होगा। ओके, और इन दैट केस so I will tell you the answer of this problem later because we have to check यहाँ पर है क्या। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग tan ऑफ पाई अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल्स टू के पाई। पॉइंट पे निकालना है, तो we will have to calculate the limit। But they are not given what is k. K is in integer. So if k is in integer, so let us see लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो दिस इज सिंपली लिमिट x टेंडिंग टू k पाई माइनस एंड दिस इज log ऑफ tan ऑफ पाई अपॉन x। एंड जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वी विल गेट log तो इसको h के फॉर्म में बदल दीजिए थोड़ा सा और लेट अस चेक क्या आएगा। तो दिस इज लिमिट h tending to 0 and this will be log of 10 और this is pi, जहाँ x है उसकी जगह पर आप लिखिए k pi माइनस का h। okay, and when you putting h you will get log of 10 pi upon k pi और कैंसिल हो जाएगा पाई से पाई, इट विल बी log 10 ऑफ 1 अपॉन 2। इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट, तो ये हमारे पास लिमिट एंड एक्सटेंडिंग टू k पाई प्लस k पाई प्लस एंड दैट इज इक्वल टू log 10 this is pi upon x, clear, and that will be equal to हमारे पास सिमिलरली log of 10 pi upon t, that will be pi upon t। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली log of 10 1 upon t। तो 10 1 upon k and when k is tending to infinity then 10 will be 10 1 by k tending to 0। एक में माइनस इन्फिनिटी आएगा प्लस एक में माइनस 0 है, मतलब आएगा tan 0 एंड दिस इज log और log 0 इज अनडिफाइंड। तो दिस इज यहाँ पर ये जो है दोनों के दोनों अनडिफाइंड वैल्यू आएंगी, डेट कह सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो हियर दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज discontinuous function is discontinuous and discontinuity
Differential of second time। क्लियर। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया एक्सरसाइज 2 का। तो in the next lecture we will discuss about the differentiability, that is most important topic। okay, so let us, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। प्रॉब्लम, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा जो है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।